All right, everyone. I would like to request you to please write in the chat box what did we discuss in the previous session, our online session introduction to linguistics. Once again, we have studied language and its characteristics. We have studied functions of language. Uh, last class, in the last online session, we started. The topic was yes, scientific approach, linguistics and its science and its scientific approach. Alifia Kushal Chand, yes, you are right. Thank you so much for your response. Okay, so let me share my screen and then I'll get back to you with the linguistics. Okay, so do you remember what especially specifically we discussed? Okay, so this is a small quiz. Can you please write in the chat box? What do we call a person who knows many languages? Any ideas? What do we call a person who knows many languages or who can speak many languages? Polyglot. Excellent, excellent, excellent. And what does a linguist do? Nayara, Kushal, Rechant, Shazmin, everybody's writing in the response section. Thank you so much. Right. So, and what do we call a linguist? Okay, a linguist is someone who, okay, how is polyglot? Okay, who may know or may not know many languages, can know only one language or can know many languages, but studies about. Okay, a linguist is someone who tries to understand the science of language, who knows many languages. Okay, all right, okay, and yeah, let's go ahead. So in the previous class, we were actually on the slide, this slide, and I was, explaining you about that what does a linguist do. Basically, when we talk about linguistics, linguistics is the study about the language. Okay, study its all components, its sentence arrangements, its words, sounds, and everything. And then I gave you an example that why do we call linguistics as a science? Why is linguistics as a science? Okay, and I think in the previous lecture you will find a lot of details about it, so we are going to move forward. And last time the meeting was ended on the note that a linguist cannot be judgmental. All right, a linguist does not say that a language should be spoken that way. People should speak this and should not speak this. He cannot be judgmental. And I was giving you an example that different animals eat different food. So we cannot say that the cow shouldn't eat grass or this animal shouldn't eat this. No, but instead of that, what is the scientific study that they study that why this particular species or animal is able to eat this particular food or not that one. Maybe you will study the mechanism, maybe you will study the anatomy, that how this food fulfills the nutritional value of uh, of a species, as well as their their system that is basically responsible to digest the food. ठीक है, so this was just an example जो मैं आपको previous class में दे रही थी uh, about the why linguistics is considered as a science, and it is also not a science. We will discuss that. Okay, another aspect in the definition that we discussed was that linguistics is basically scientific study of human languages. So when it comes to human languages, what does that mean to you? Okay, जब हम human linguistics की बात करते हैं, it is human, so it means that it is important that we need to focus on it is the science of human language. Now, when we say it is the science of human language, uh, you know, uh, animals do communicate, but they do not have the complex system of speech like we call the articulatory system, like our lungs, larynx, our vocal folds, our shape of our tongue, our teeth, our lips, our nose. All right. So when we speak, it all enable us to produce a speech. All right. Um,
For example, that if you just notice when you are speaking, your certain organs in your body, your vocal system, your lungs, your larynx, and your teeth, your tongue, everybody plays an important part in the production of the language that we speak. All right. And then as well as we have auditory system, we have our ears. They are sensitive to exactly the frequency that are most common in our speech. Okay. So you see that we can hear the language, we can speak the language for the communication purposes. So on the other hand, you see कि आपका जो articulatory system है जो कि लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, आपका जो ऑडिटरी सिस्टम है जो कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और परसीव करता है, इजंट इट साइंटिफिक? ये तो साइंटिफिक है ना. देखिए आपका सोशल इंटरेक्शन में नॉट बी साइंटिफिक. nobody can say that you should talk this and you shouldn't talk this, या आपको ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये तो नॉन साइंटिफिक हो गया. फाइन, fine. But what about the articulatory system, the auditory system, the organs that are involved in the speech production, and the most important is your brain. So ये सारी जो स्टडी है, एक स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी में क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी. ऑलराइट. तो सिमिलरली आपकी जो स्पीच प्रोडक्शन है उसमें व्हाट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? Definitely your vocal cord, your organs that are responsible for the speech perception and the production. आप लैंग्वेज को समझते कैसे हैं, उसमें आपका ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ साइंस आ गई, यू नो. So definitely here we can say that language is and linguistics and study of linguistics is the scientific study of human language. Why it is scientific? Then it is scientific because we study about its science, that how language is perceived and produced. But on the other hand, why is it not put in the discipline, in the scientific discipline? आप जब linguistics पढ़ते हैं तो आपको MSc की डिग्री तो नहीं इशू होती, ठीक है? You get a degree that is in humanities, in languages, social sciences. तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि was that हमने इसको भी स्टडी किया था. Okay. In other words, we can say that it is between natural and social sciences. अब नेचुरल साइंसेस क्या है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी क्या है? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं. एंड डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स, or man is part of nature. तो जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, about their body, about their anatomy, about the organs, how they function, ठीक है, ये तो साइंस हो गई है. राइट. लेकिन ये सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के बीच में है लिंग्विस्टिक्स. अब सोशल साइंसेस क्या है? सोशल साइंसेस ह्यूमन इंटरेक्शन, हाउ पीपल लिव इन सोसाइटी, हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन पीपल हैव इन द सोसाइटी, किस किस्म की लैंग्वेज बोली जाती है, what is the influence and the impact of languages, culture, gender. I mean, when you are living in society, it is very vast. आपका कल्चर, आपका रीजन, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, आपकी आपकी हिस्ट्री, एवरीथिंग अफेक्ट्स योर लैंग्वेज. तो ये सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के बीच में है, क्योंकि इसमें हम ब्रेन फंक्शनिंग भी पढ़ते हैं, इसमें हम वोकल कोड भी पढ़ते हैं, इसमें हम आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी सिस्टम को भी स्टडी करते हैं एक लिंग्विस्ट. ऑन द अदर हैंड हम लैंग्वेज एंड सोसाइटी के कनेक्शन को, उसके इंटरएक्शन को और उसके उसके जो कनेक्टिविटी है हम उसको भी डिस्कस करते हैं. दैट इज व्हाई linguistics is between natural and social sciences. Okay, so I hope it is clear till here. अच्छा जी, अब हम करते हैं, these are some definitions. I would you to now branches of linguistics. Do you have any ideas what are the branches of linguistics? Okay, can you please write in the chat box so that I can know that you know about it or you have studied about it? Any ideas? Okay, morphology, phonetics, okay, syntax, okay, social linguistics, okay, pragmatics, okay, fine. Tahira, Seema, thank you so much for your contribution because you are always very active in the chat box that I really admire. Let me admit. Okay, now today we are going to study about the branches of linguistics, but little different. Okay, yeah, these are semantics, morphology, syntactics, and phonetics and phonology.
there are levels of linguistics. Okay, जब हम approaches की बात करते हैं ना, that basically what we study in linguistics, तो वो हम करते हैं, but branches of linguistics में क्या आ जाता है? Oh, exactly, Ramsha, you are right. Psychological, all right. Branches of linguistics is psychological linguistics. चलें जी, अब हम start लेते हैं. um, I want to ask you, what do you see on the screen? क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? Can you please write in the chat box? What is this? This is a poster. This is a poster of a movie which is very popular, and I hope that many of you have watched this movie. Okay, that is Tare Zameen Par. Acha, can you please tell me that that boy in this movie was had a problem? उसका मसला क्या था? किसी को पता है? कोई बता सकता है? Mm-hmm. What do you think that if you have watched this movie, can you please tell me that what was the problem that this little boy was suffering from in the movie? उसका मसला क्या होता था? In the classroom, how did he feel? He was mentally depressed. He was weak in his studies. Okay, he had no confidence. Sabah, thank you so much, Tahir. And Abdul Sattar, he had phobia. Okay, he was unable to understand anything. All right. Words dancing around him. Zainab, excellent. This is what I was looking for, and I was just waiting for that. All right. Do you remember that when he was sitting in the classroom and the teacher came in the class and there was a language subject? So all the words and the spellings and everything that was, he could not concentrate on. उसके जो letters होते थे language में जो वो पढ़ रहा होता था, they were like dancing in front of him. All right. He was not able to comprehend. He was not able to connect with the language. ये प्रॉब्लम था. अच्छा, उसको हम साइंटिफिकली उसको कहते हैं हम डिसलेक्सिया. हैव यू एवर हर्ड अबाउट द प्रॉब्लम डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या होता है? जो बच्चा था इस मूवी में, उस वो था डिसलेक्सिक एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया. अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे इस मूवी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये जो मूवी बनाई गई है वो एक स्टडी बेस्ड है और उसमें जिस चीज को हाईलाइट किया है दैट इज अ लर्निंग डिसऑर्डर. ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया. ठीक है ना? व्हाट इज लर्निंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया में क्या होता है दैट अ स्टूडेंट और चिल्ड्रन, okay, they have difficulty reading due to the problems identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words. उनकी decoding नहीं होती है. All right. For example, if something is written in English में, जो एक कोई भी language उनके सामने है, वो क्या करते हैं? They do not connect with it. उनका brain जो है वो उस तरह से function नहीं कर रहा होता, या ये एक ऐसा learning disorder है जिसमें उनको reading एंड राइटिंग और रीडिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे हम उसको. रीडिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, रिलेट नहीं कर पाता है, डिकोड नहीं कर पाता है मीनिंग को. तो दिस इज अ रीडिंग डिसेबिलिटी. ओके, और ये क्यों होती है? बिकॉज डिसलेक्सिया is due to there are some parts in your brain that are affected and they do not process language accurately. ठीक है? तो आपका जब ब्रेन होता है उसके साथ उस पे कोई डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट, चलेंगे. अब हम करते हैं कि इसका हल क्या है. हु इज द वन हु विल डील विद दीज प्रॉब्लम्स? जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं उनको कहाँ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, हु डज दैट? ये सब अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये सब किसके अंदर आएगा? Psycholinguistics के अंदर आएगा. So one of the branches of linguistics is psycholinguistics. Okay. अच्छा, अब psycho and linguistics ये कितनी terms आपको नजर आ रही हैं? 2 terms नजर आ रही हैं. Okay, so we can say that psychology means the study of brain and human behaviors, definitely, or linguistics means language, related to language. Okay, so in other words we can say that the psycholinguistics is also called psychology of language. इसको हम क्या कहेंगे? Psychology of language. And psychology of language is the study of psychological factors that enable humans to acquire, use, comprehend and produce language. I mean, देखिए, आप लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं. एनी लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक, एनी लैंग्वेजेस दैट वी स्टडी, ओके, उसमें क्या होता है? देयर इज अ प्रोसेस. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या कीवर्ड्स मैंने यूज किए? एनेबल ह्यूमंस टू एक्वायर, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन.
लैंग्वेज सीखी कैसे जाए, यूज एंड कॉम्प्रीहेंड, उसको कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, एंड देन प्रोड्यूस लैंग्वेज. It means that this is two-way communication. All right. So when you talk about the language learning process, it is like acquisition of the language. आप पहले language सीखते हैं, then you use the language in your day-to-day communication. All right, you listen, I mean your auditory system is also involved. You listen to the language and then you respond to the language in speech form. तो ये सारी फंक्शनिंग कहाँ पे हो रही होती है, लेट मी नो. आपका जो पूरा लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज प्रोडक्शन जो होता है, ये सब आपके बॉडी के किस पार्ट में हो रहा होता है. चलिए मुझे अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का बता दें, किस पार्ट में हो रहा होता है. जारिश कोसर, एक्सलेंट, ब्रेन, आपके ब्रेन में हो रहा होता है. Alright, I mean you see that brain is the chief organ that is responsible for the language acquisition and the language production. ठीक है, देखिए अगर आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी आपके ऑर्गन्स के साथ नहीं है, राइट, फॉर एग्जांपल दैट if your brain doesn't give you signals, will your tongue be able to speak and work? No, नहीं करेंगे ना. हम सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में चीजें होती हैं. ऑलराइट, मतलब our other body parts, all right, our other organs in our body, they are actually the subservient, you can say the slave of our brain. Our brain is the master of all the activities that we carry out. Okay, if you touch something hot, अगर आप किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, जस्ट इन अ नैनो सेकंड आपको एक सिग्नल मिलता है और अपना हाथ आप हटा लेते हैं. ठीक है, वो सिग्नल आपको कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है. यू हैव द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी. So definitely, how is it possible that a language that you speak is just you speak because you have a tongue, because you have ears, क्योंकि आपके पास कान है, आपके पास जबान है, आप बोल सकते हैं, and that is why you speak language? No, you have a brain that is actually responsible for the production of language. ठीक है, चैलेंज. अब साइकोलिंग्विस्टिक्स का स्कोप क्या है, साइकोलिंग्विस्टिक्स में साइकोलिंग्विस्ट क्या करते हैं, किस चीज को स्टडी करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं. सो वन मोर थिंग, दैट साइकोलिंग्विस्टिक्स कवर्स द कॉग्निटिव प्रोसेस. अब आपका कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, थिंकिंग हो रही है. राइट, आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट अब द लैंग्वेज वी स्पीक, we don't speak randomly, we first think what we need to speak. सबसे पहले हमारे जहन में एक थॉट आता है. ओके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, you may not be able to answer, I will not be able to get the same answer other than maths. अगर मैं कहूँ 2 + 2, आप सब कहेंगे 4. बट अगर मैं कहूँ what are your favorite destinations in the world and you would like to visit, कि आप दुनिया में कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन सी जगह विजिट करना चाहते हैं, तो you will actually not be giving me the same answer. Your answers will be different. Okay, so ये जो thought process आपके जहन में हो रहा है, that helps you to respond. Exactly, you make an image. Excellent. Kausa, you make an image in your brain. सबसे पहले आप सोचते हैं, आपके जहन में एक इमेज बनती है, and after that you speak that thing. So अब जब हम ब्रेन की बात करते हैं, तो apart from brain structure, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, उसमें थिंकिंग प्रोसेस होता है, मेमोरी होती है, हम चीजों को याद रखते हैं, फिर आपका परसेप्शन, हाउ डू यू टेक द थिंग्स, आप किस एंगल से चीजों को देखते हैं. We all have different angles, we all have different perspectives to look at the things. And then learning, which make it possible to generate and comprehend the grammatical and meaningful sentences out of vocabulary and grammar structure. Okay, so you see that everything is happening in your brain, your thinking, your memory, your perception, your way, the way you look at the things, your grammatical understanding, your comprehension, your understanding the vocabulary and the sentences. Okay, everything is dependent on your brain challenging. Now, next we go. There are few terminologies that I would like you to please pay attention to, जो कि इसमें हैं. अच्छा, now कुछ चीजें, कुछ keywords हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें when it comes to psycholinguistics. So, first key point is that language is a mental phenomena. It is a mental process. Clear? तो जब हम साइकोलिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, तो साइको में आ जाता है आपका मेंटल प्रोसेस. रिमेंबर दैट. एंड it is a mental process which is articulated in language behavior. अब
आपकी जो लैंग्वेज है, इट इज द रिजल्ट ऑफ योर मेंटल प्रोसेसेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ द थिंकिंग, इट इज द रिजल्ट ऑफ योर परसेप्शंस। अच्छा, अब साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या स्टडी करती है? इट स्टडीज योर मेंटल प्रोसेसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ थॉट and the concept formulation and their articulation in language, which reveal a great deal about the structure of human psychology and as well as of language cognitive. It means we can say that psychology is an area that explores how meanings are understood by the human brain. Like आपके किसी भी चीज की जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, आपका ब्रेन उस चीज को कैसे रिसीव कर रहा है, और राइट, एंड हाउ सिंटेक्स एंड मेमोरी आर लिंक्ड and how messages are decoded and stored. अब क्या होता है आपके ब्रेन में, when you are reading something, when you listen to something, you are able to save this information in your brain. आपके ब्रेन में वो information store होती है for some time. और आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, आपका एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, आपका एक अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ complexities. So human brain is basically is a very complex organ. All right, it is the chief organ. It is the master of all the activities that controls our all activities. It is the master. तो आपकी जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है या आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसका ताल्लुक भी आपके ब्रेन से होता है। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स से हम कौन कौन से वर्ड्स कनेक्ट करेंगे? इट इज अ मेंटल फिनोमिना, इट इज अ मेंटल प्रोसेस, एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि साइकोलिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज आपकी इंटेलिजेंस, ओके, आपका मोटिवेशन, आपकी एंजाइटी, एंड ऑन द काइंड ऑफ द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड एंड प्रोड्यूस्ड। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है, कभी आपने नोटिस किया है कि आप अगर कोई चीज देखें जो कि सेंटेंस सिंथेटिकली, यू नो, ग्रामर वाइज अगर वो गलत लिखी हुई है, तो सडनली आप, यू आर रीडिंग समथिंग इन अ फ्लो एंड सडनली यू स्टॉप, आपको लगता है जहां गलती होती है, तो आवर ब्रेन गिव्स अस सिग्नल्स, हम वहां स्टॉप हो जाते हैं, हमें लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये सिग्नल आपको आपका ब्रेन दे रहा होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? ऐसा क्यों होता है कि समटाइम्स व्हेन रॉन्ग इंग्लिश एंड रॉन्ग ग्रामर इज स्पोकन, अगर आपको कोई जबान अच्छी आती है, ठीक है, चले आपको पंजाबी बहुत अच्छी आती है या बलोची बहुत अच्छी आती है, एंड इफ समबडी स्पीक्स रॉन्ग यू नो पंजाबी और बलोची, सडनली आप स्टॉप हो जाते हो उस चीज के ऊपर, यू योर ब्रेन गिव्स यू सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग। सिमिलरली व्हेन यू आर रीडिंग, ओके, आपको लगता है कि जहां ग्रामर गलत होती है, आपकी जो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं फ्लोज आ गए, आप वहां रुक जाते हैं फॉर अ सेकंड एंड योर ब्रेन गिव्स यू इंडिकेशन दैट यहाँ पर कोई ना कोई गलती है। ओके, सो एरर डिटेक्शन मेड बाय अ स्पीकर, okay, and this is, we can say, it is actually, this may be the psychological reasons which influence our comprehension and production of the language and language of an error. All right, correct. Now let's talk about mental disabilities. एक psycholinguist क्या करता है? There are mental disabilities that he studies. For example, a result in the if somebody results in the mistake, make mistakes made by children in reading, when they make mistakes one letter, or when they mix, or when they make a mistake, or when they misunderstand, okay, one letter for another, which is called dyslexia, जिसकी अभी मैंने आपसे बात की है। ठीक है, तो साइकोलिंग्विस्ट क्या ऑफर करते हैं? They offer some insight and corrective measures for this condition. Clear? तो अगर किसी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, या उसको डिसलेक्सिया है, या स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो स्पीच थेरेपी है, वो जो करेक्टिव मेजर्स हैं, वो आपको कौन ऑफर करता है? साइकोलिंग्विस्ट्स, जिन्होंने साइकोलिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया हुआ होता है। ठीक है, ऑलराइट, yes, our mind's thinking starts from that point. Exactly. चलें, we have discussed mental disorder, dyslexia. ठीक है, now अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट योर अर्ली एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ऑन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट हाउ डिड यू लर्न योर फर्स्ट लैंग्वेज? आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखी थी? आई मीन, यू नो, इफ यू स्पीक पंजाबी और इफ यू स्पीक पश्तो, ऑलराइट, दैट लैंग्वेज वाज, how did you learn that language? You learned that language from your environment. You acquired that language from the environment because that language was spoken around you. आपके around अगर वो language बोली जाती है, तो आप उसको pick कर लेते हैं. All right. So psycholinguistics is also connected
with the learning of language at various stages. तो अब psycholinguistics में हम क्या स्टडी करते हैं? The early acquisition of first language by children, and then what happens in the later stages, okay, in the later stages in acquisition of first and other languages. अब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज वो है जो आपके घर में बोली जाती है, मे बी आपकी सेकेंड लैंग्वेज वो है जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, दैट इज इन आवर कॉन्टेक्स्ट उर्दू, ठीक है, एंड देन यू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, दैट इज मे बी फ्रेंच, दैट इज मे बी जर्मन, ओके. So you see that you learn different languages. You can be monolingual, you can be bilingual, you can be, multilingual. All right. A person who speaks two languages is bilingual. A person who speaks more than two languages is multilingual. So normally Pakistani context में तो हमारे बच्चे, they are multilingual हैं. I mean, everyone can speak three languages in Pakistani context, if I'm not wrong. So correct me if I'm wrong. कि आपकी सबसे पहले अपनी मदर टंग है, ठीक है, देन बिकॉज उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज तो हम उर्दू पढ़ते ही हैं, फिर आप जिस प्रोविंस में रहते हैं आप उस प्रोविंस की भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तीन, और फिर आप पढ़ते हैं अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका, दैट इज इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. So you see, we all are multilinguist, we at least can understand and speak four languages at a time, कम से कम, ठीक है. तो वो लैंग्वेजेस आप कैसे सीखते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज. अब जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं उससे आप फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं सीखते. Like, the way you learned your first language, Pashto or Balochi, okay, you don't learn English that way. आप इंग्लिश तो उस तरीके से नहीं सीखते. So what are different mental processes? आप फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के, right? So this is all we study in psycholinguistics. Okay. Now, but psycholinguistics actually, it is also a kind of, an effort, or you can say, is an attempt to answer the questions such as, like, is the human brain, whether the human brain has an inborn language ability in a way that, uh, you know, uh, in a way that a certain grammatical synthetic patterns are embedded in it, which can explain how all human beings are capable of learning a language. तो जैसे नोम चॉम्स्की की थ्योरी आ जाती है जो कि हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, नोम चॉम्स्की को हम बहुत डिटेल में अलग से पढ़ेंगे. तो देयर आर मेनी, यू कैन से क्वेश्चंस. यहाँ पर देयर इज अ वेरी ह्यूज डिबेट, बहुत ज्यादा लंबी डिबेट भी चलती है इसके ऊपर. फॉर एग्जांपल कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं वहां पर बड़े मेजर क्वेश्चंस आते हैं, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्विप्ड विद सम काइंड ऑफ लैंग्वेज नॉलेज. क्या इज देयर समथिंग इन योर ब्रेन that helps them in the language learning, or is there something that they learn from the environment? How do people comprehend and produce language? लोग कैसे language सीखते हैं उसके ऊपर there is some say that it is inherited, like it is an inherent ability. आपके अंदर एक generation to generation एक inherent ability है for learning a language, and some say no, it is not inherent. A child is learns a language once he is born. The society, the environment where he is born, he picks the language of that environment, okay, which is spoken. So there is a huge debate. So psycholinguists, they also try to find out the answer of this thing, that whether it is an innate ability, या कोई inherent ability है, या कोई external sources हैं that can help us to learn and acquire language. ठीक है? Now let's go to the, okay, now ये बड़ी interesting बात है, how languages are perceived. हम languages को कैसे सीखते हैं, okay, languages को हम कैसे perceive करते हैं. Definitely it is a mental process. अगर हम इसको कहते हैं कि it is a mental process, then what part of the brain is responsible? Okay, Sabah is saying कि shopkeeper ज़्यादा languages. Exactly, your interaction. If you are meeting more people who speak different languages, so you definitely pick the language. If not completely, but some sentences. Okay, psycholinguistics mentally treat about language and linguistics. Deepak Kumar, you are right. Sabah, I take your point. Exactly. If you are living in Pakistani, अगर हम बात करें अपने कराची सिटी की भी, so we are living in a very heterogeneous city. Karachi mein all ethnicities, all languages, all groups, all communities are living. So Karachiites, they have more exposure to listen to more languages. अगर आप एक अपने देखें, when you are in your neighborhood, if you see, अगर आप एक neighborhood में देखेंगे, so you will find people who speak at least 10 different languages. आपको अपने
इमीडिएट नेबरहुड में कोई मिलेगा जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, आपको 2 घर छोड़ के कोई मिलेगा वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है। तो डेफिनेटली द एनवायरनमेंट, आपकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, आपकी जो कम्युनिटी है, जो स्पीच कम्युनिटी है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, ऑलराइट, वहां पर व्हाट इज इट लाइक मोनोलिंगुअल कम्युनिटी और इट इज अ मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी? आप कितनी डाइवर्स कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो अगर हम कराची की बात करें तो हम बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है। कराची इज अ वेरी डाइवर्स सिटी जहाँ पर आपको हर तरह के हर जबान बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो चांसेस आर मोर दैट यू विल बी एबल टू पिक more languages from around I can speak 4 languages अब देख सकता है। Yes, exactly I said कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो we are not monolinguals at all, we speak more than 3-4 languages. Clear? अच्छा, अब let's specifically talk about that what part of your brain is actually responsible. हम थोड़ा सा इसको scientifically touch करते हैं, not a lot. उसमें ये है कि you today now I'm going to tell you there are two scientists, okay. One of the pioneers of this research was a French neurologist named Paul Broca during the early 1870s. ठीक है, so Paul Broca ने discover किया a region in the brain that is associated for the production of just wait a minute. The production of, all right, he discovered a region of the brain that is associated with the production of spoken language, and he found that damage to this area resulted in problems producing the language. And there was another neurologist named Carl Wernicke. He identified Wernicke's area. अगर आप इसको Google करेंगे, so you will find out which is associated with the understanding of a spoken and written language. So these two scientists, they did further study on the brain and the parts of the brain, that which parts of the brain they are responsible for the language acquisition, understanding, and for language development, and which part of the brain is responsible for the language production. Okay, sometimes it happens that aapne you want to say something that is in your brain but it doesn't come to your tongue. Have you ever experienced that? मुझे बताएं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं that is in your brain, okay, but you are not able to connect, लेकिन आप उससे connect नहीं कर पाते हैं. Has it ever happened with you? Yes, yes. अब आप देखें कि why does it happen that we have lots of things to say in our brain and we have a lot of good ideas, they are flashing out in our brain and mind, but we are not able to bring that to our tongue. हमारी जबान उस चीज को को नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है. दैट इज लैंग्वेज प्रोडक्शन. देखिए, आप जब लैंग्वेज सीखते हैं, यू आर लर्निंग, it's we don't have words sometimes, yeah, you find short of words. So look at this image, these two parts of brain. So please थोड़ा सा आप लोग देख लें. All right, so this purple area is Broca's area, okay, and this Wernicke's area जो कि आपको नजर आ रहा है, which is in orange color shaded, it's the Wernicke's area. अब हम थोड़ा सा ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं because we are not neurologists and scientists, but हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है. Now Broca's area located in the left hemisphere and is associated with the speech production and articulation. Okay, so आप look at this Broca's area, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के पास होता है, all right, और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन. जो आप बात करते हैं दैट कम्स टू योर टंग, जो आप सोचते हैं, ऑल राइट, दैट कम्स टू योर टंग. तो अब क्या होना चाहिए दैट आपके बढ़ने की एरिया एंड ब्रोका एरिया दोनों को आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. If they are not well coordinated, then what happens? Your thoughts in the brain will not be able to be produced and articulated by your tongue. आपकी जबान उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी if these two areas are not well coordinated. Okay, so broca area क्या है? It is responsible for the speech production and articulation, our ability to articulate ideas as well as words accurately in spoken and written language. All right, what is Wernicke's area? Wernicke's area is the critical language area in the posterior temporal, I like up in your brain, all right. अच्छा, अब ये क्या करता है कि जो आपके पास ये जो you can see
a kind of a दोनों को जो चीज मिला रही है, it's a tube-like structure. All right, this is a tube-like structure that connects Wernicke's and Broca's area in your brain, which we can call a temporal lobe. It connects to Broca area via a neural pathway. ये neural pathway है आपका, ठीक है? Now, Wernicke's area is primarily involved in the comprehension. Comprehension means understanding of the language, and this area has been associated with language processing. अच्छा, अब आप language को process किस में करते हैं? अपने brain में करते हैं, ठीक है? आप language को process किस में करते हैं? अपने brain में करते हैं. Your language is processed in the brain. Your sentences are formed in the brain. आप जो भी कुछ, you know, your vocabulary, the words that you would like to speak, the sentences that you would like to speak, वो processes का जो responsibility है वो Wernicke's area की है. And if your Wernicke area and Broca area, they are well coordinated and connected, तो फिर क्या हो जाएगा कि whatever you imagine, all right, it is just in milliseconds, it is on your mouth, it is on your tongue. Clear हो गया? So what happens कि जैसे ही आप, all right, yes, I take the screenshot, don't worry, I take the screenshot. ठीक है, मैं screenshot ले लेती हूँ. अरे चलो, every time आपने जिसने भी हमें ज्वाइन किया हुआ होता है. Clear हो गया? Yes, so don't worry about it. Okay, Ghazi Khan. Okay. चलें. Both classes के अलग अलग. Definitely. All right. अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? By the way, just write in the chat box. Isn't it very interesting to study about brain? That today we understood actually, you know, what is coherent. Coherent means well coordinated, जिसमें fumbles ना हो. All right. You know, sometimes people say, oh, this and that. It is the discontinuation. All right. So अब होता ये है कि if your Wernicke area and Broca area, they are well connected, आप लैंग्वेज को परसीव करते हैं and just in milliseconds आपके जबान पे वो चीज आ जाती है. Okay, alright, like अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, okay, you see कि मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस कितना फास्ट कर रहा है. Alright, right now I'm just thinking and I'm saying to you and I'm discussing with you and I'm asking you questions and I'm just, you know, switching my conversation from this point to that point. It is happening very quickly. Alright, तो वो जो आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज, आप सिंपली आप ये समझते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है? एक कंप्यूटर है, उसमें जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, आप उसको इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, ऑलराइट, एंड जस्ट इन नैनो सेकेंड्स आपके